So a very good evening, good afternoon, whatever is the time when you're watching this video. It's 3 a.m. in the morning. It's Sunday and I'm pretty much excited for this trip. Yeah, I didn't tell you about it. So I'm going on a trip and I haven't told you yet where I'm going, where I'm heading towards. And yeah, this is going to be very exciting. I'm keeping my fingers crossed for this, and I want this trip to be a very successful trip. And one more thing is, so I have got to get ready, and before I get ready I need to make tea, because आप लोगों को पता है मैं बिना चाय पिए तो कहीं जाता नहीं. चाय मेरी कमजोरी है और कमजोरी हमेशा दूर करनी चाहिए. सो आई हैव कम इनटू माय किचन और मैं यहाँ पे चाय बनाने जा रहा हूँ. तो मैं दूध ऐसे रखता हूँ, इसे क्लिप लगा के, जैसे गिरता नहीं है. तो इट्स आई थिंक इट्स बेटर वे टू कीप मिल्क और जो भी आपका टाइट, ये एयर टाइट रखता है एक्चुअली आपका स्टफ. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बर्तन में दूध ले लूँगा. सो जब तक मेरी चाय बन रही तब तक मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बता देता हूँ. मैं अभी बैंगलोर में हूँ और अभी फिर इसके बाद मैं जाऊँगा. आई हैव कॉल टैक्सी, तो टैक्सी वाले भैया का भी कॉल आया नहीं है. तो द मोमेंट ही कॉल्स मी अप आई हैव टू गो. फिर उसके बाद मैं जाऊँगा एयरपोर्ट. फिर एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है. कहाँ के लिए फ़्लाइट है वो आपको मैं आगे बताते रहूँगा. यू कैन सी चाय ने भी अपना कलर छोड़ा नहीं है, बट इट विल थोड़ी टाइम में कलर छोड़ेगा ये चाय. तब तक के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, आई विल जस्ट क्विकली हैव समथिंग, बिकॉज मुझे पता है फ्लाइट में आई डोंट ईट मच बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ मोशन सिकनेस. सो फ्लाइट में मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ. तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेड्स 1-2 स्लाइड्स खा लूँगा ब्रेड के चाय के साथ. मैं आपको खाने के बाद मिलता हूँ. मैं तैयार हो गया हूँ और भैया भी आ चुके हैं टैक्सी लेकर के. और दिस इज़ माई स्मॉल बैग व्हिच आई एम कैरिंग विद मी. नीचे चलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं और एल्स आई विल स्लीप ऑफ. Break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been.
से 10 मिनट की दूरी पे है शिरडी से जो मंदिर है बाबा का। तो मैं वहाँ से अभी नहा वहा करके अभी निकला हूँ दर्शन के। इसके आगे कैमरा ले जाना मना है, तो मुझे वहाँ पे अभी सबमिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे सबमिट करना पड़ेगा मोबाइल कैमरा। तो दर्शन के बाद मिलते हैं फिर आपसे बहुत अच्छे से। और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 1 घंटे में दर्शन भी हो गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था तब इतने अच्छे दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो अभी हो रहा है 9:30 और मैं जा रहा हूँ अभी प्रसादालय, क्योंकि बोलते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होता है प्रसाद जो वहाँ मिलता है। तो मैं वो टेस्ट करना चाहता हूँ। बाहर से ऐसा दिखता है प्रसादालय। अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये लाइन है, यहाँ पे आप लाइन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये अभी नेक्स्ट डे है, 9 तारीख है, 9 दिसंबर। और फिर से जा रहा हूँ बस का टिकट लेने, बिकॉज आई नीड टू गेट बैक टू मुंबई, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग आवर्स। बहुत टाइम लगता है मुंबई जाने में या फिर मुंबई से शिरडी आने में। तो इट टेक्स अराउंड 7 to 8 आवर्स। तो बस का ट्रैवल तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खतरनाक लगता है। एंड कमेंट करके बताओ किनको किनको प्रॉब्लम है बस ट्रैवल से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मे बी मोशन सिकनेस और समथिंग, बट टिल नाउ टचवुड आई डिड नॉट फेस any problem like that. But preconceived notion is there in my mind that bus travel is very hectic. But then also if there is no option and you are traveling alone, then you have to. But still you learn a lot. Travel is the best teacher, I should say. And this is what I have been doing. Like, I love travel, but I don't get time generally. so I don't travel much, but I want to. मुझे लगता है कि मैं आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा, जिससे आप सबको एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो अभी जाता हूँ मैं, बस का टिकट लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके।